Hello, my dear friends. Welcome to our today's lecture. This is an important platform where you will be going through the easy questions. So, when you are preparing in this exam, you have to be confident about these questions also. Most of the questions will be asked from Consendo, OS, and Prosto. Okay, here we'll be trying to discuss 100 MCQs. These are most important for state, PSC, INI, CET, NEET, and BS. Now, some students are eager to know that these questions or are questions separate for each of these exam. In our academy, there is nothing like separate exam course. We make your base clear. We make your thought process clear for any topic. Okay. Afterwards, you can go through the questions. We will start today's lecture after all the students are present. Hope my voice is clear. So, what about the first question? First question here is which phase transition is responsible for shape memory? Okay, in R phase night eye endodontic files, what is the answer? Today we'll be trying to be fast in answering. First question answer. B is the correct answer. In this R phase file, R phase is converted to austenite for shape memory. Okay, here in case of M2A or martensite to austenite, it is the superelasticity property. Okay, and in case of shape memory, we have R phase to austenite. Okay, next question. In the degradation of resin dentin bonds, okay, in the degradation of resin dentin bonds, which specific host derived enzyme is primarily responsible for the cleavage of pteropeptides in collagen fibrils? ओके, थोड़ा टफ क्वेश्चन है. आपको लीव करना है तो लीव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. C is the answer, correct answer. Cathepsin K is the correct answer. Okay. Next question. Here some data is missing, so we'll leave it. Question 4. Question 3 को आपको वैसे ही E रखकर छोड़ देना है. Question 4. What is the critical sealing temperature relevance in the polymerization of dental composite? What is the critical sealing temperature relevance in the polymerization of dental composites? A is the answer by some student. Let's see. That is correct answer. Temperature at which the rate of polymerization equals the rate of depolarization. ठीक है? Critical sealing temperature.
Next question. Envelope of motion in the self-adjusting file system is best described as. दोस्तों में भी envelope of motion आता है, तो यहाँ पे envelope of motion क्या आएगा? In 5, B is the answer. Correct answer. Vertical vibration with a 4.4 millimeter amplitude and 5000 vibrations per minute. ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा ही डीप में समझा दिया। पहला जो है वो बैलेंस्ड फोर्स टेक्निक है, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स और रेसिप्रोकेशन। क्वेश्चन 6, what is the C factor of a deep class 1 occlusal cavity with a flowable liner applied only to the pulpal floor? C factor क्या आएगा इसमें? A is the answer by some and C is answered by some students. Here the correct answer is 5. ओके, अब कैसे 5 बनता है ये आपको देखना है। टोटल 5 बॉन्डिंग सरफेस होगी, 4 वॉल्स और एक फ्लोर, ठीक है, तो और एक अनबॉन्डेड होगी, तो 5/1 यानी कि 5, ठीक है। तो लाइनर से आपको केविटी की ज्योमेट्री या नंबर ऑफ वॉल्स नहीं अटैच होगी, ठीक है, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 7, which specific MMP inhibitor is naturally found in green tea extract and is used to stabilize the hybrid layer? Question 7, which specific MMP inhibitor यानी कि वो MMP inhibitor है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में भी वो देखा जाता है। Here the answer is C, एपिगैलेक, बहुत बड़ा नाम है, एपिगैलो कैटेचिन EGCG आप याद रखिए, ठीक है। ये एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप याद रख सकते हो क्योंकि ये कुछ नया भी है और ये तो नहीं आएगा क्लोरेक्सिडिन और ये भी नहीं आएगा, दो में से एक था, तो ये क्वेश्चन आपका सेकेंड राउंड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन ऑफ गट्टा पर्चा व्हाट इज द अल्फा फेज कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, अल्फा फेज क्या है? Correct answer, low viscosity and high tackiness, that is the property of alpha phase in warm vertical compaction। और ये फेज कब आता है? 42 to 49 डिग्री, ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं।
What is the primary cause? Ninth question. Dentine bluing observed under translucent ceramic restorations. डेंटिन ब्लूइंग क्यों होता है ट्रांसल्यूसेंट सिरामिक रेस्टोरेशंस के अंदर? वेलकम ऋतु सुखड़िया, पहली बार आप लेक्चर में आए हो। नाइन्थ में आंसर है ए, इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ रेसिडुअल सिल्वर इन ओल्ड एमालगम स्टेनिंग। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन ड्यू टू ऑफ ब्लूइश ग्रे हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन स्ट्रेस स्ट्रेन behavior is unique to nitrile which, not when, which stress strain behavior is unique to nitrile compared to stainless steel during root canal preparation? Linear elasticity, pseudo strain hardening और ultimate tensile failure, कौन सा यूनिक प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील? ये तो आपको पता ही होगा, इसकी प्रॉपर्टी तो बार बार क्यों यूज होती है। B is the correct answer. Due to this property only and shape memory, we are using this ProTaper or NiTi files. Okay, these are the two property. और pseudo elasticity होती है ना, तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Which 11th question, which specific inhibitor is added to liquid of zinc polycarboxylate cement to prevent premature thickening and control the setting reaction? पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट का जो लिक्विड होता है उसमें हम कौन सा इनहिबिटर ऐड करते हैं? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम एसिड का जो रोल होता है वो आपको परफेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, टार्टरिक एसिड है वो जीएससी में मॉडिफायर की तरह काम करता है, और इटेकोनिक एसिड है वो क्या करेगा, विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा और जिलेशन को प्रिवेंट करेगा, थिकनिंग अटकाएगा। ठीक है, स्टोरेज के टाइम। मेलिक एसिड है वो क्या करेंगे, वो डेंटिन कंडीशनर्स में भी यूज होता है, और इन सम न्यूअर जीआईसीस वी आर आल्सो हैविंग दैट। 12th question, according to hydrodynamic theory, according to hydrodynamic theory, ये तो डीएडीएच का क्वेश्चन है। Which specific neuropeptide is released from pulp when dentinal fluid movement stimulates A delta fibers? ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, चौथा है डी नन, तो आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहोगे? कौन सा न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होगा पल्प के अंदर से जब ये डेल्टा फाइबर स्टिमुलेट होंगे? 12 में बहुत सारे लोगों ने ई आंसर दिया है, ये आंसर इज डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स ए डेल्टा फाइबर स्टिमुलेशन। ठीक है, वो हाइड्रोडायनेमिक होता है और माइलिनेटेड होता है। दे डोंट रिलीज एनी न्यूरोपेप्टाइड्स, किसकी तरह, सी फाइबर्स की तरह। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिन्होंने भी ई आंसर दिया वो बड़े स्मार्ट निकले, उनका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ।
Question 13. What is the Goldman-Fox effect in the context of radiographic interpretation of endolesions? Goldman-Fox effect क्या है? What is the Goldman-Fox effect? Some are telling B, some are skipping. The answer is B. Inability to visualize a periapical lesion until the cortical plate is involved. सही बात है, गोल्डमैन फॉक्स ने थोड़ा रिसर्च ज्यादा किया था. कॉर्टिकल प्लेट जब तक इन्वॉल्व नहीं होती तब तक हम पेरियापिकल लीजन विजुलाइज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th question. In the manufacturing of M wire nitride, the alloy undergoes which specific thermal treatment? 14th question. B is the correct answer. It's a thermomechanical processing in the martensite phase. ठीक है, और इसीलिए हम साइक्लिक फटीग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. ये एम वायर की तरह जो प्रॉपर्टी होती है वो. Which photo initiator is commonly used in bleach shade composites where camphorocyanone is avoided? ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव है. कैम्फोरोक्विनोन तो आपने पढ़ा होगा, इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? बी इज द करेक्ट आंसर, ल्यूसिरिन टीपीओ. ठीक है, ये तो आपने पहली बार ही सुना होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बेहतर ई आपको टिक करना है. इट इज एन कैम्फोरोक्विनोन ऑल्टरनेटिव. ठीक है, और ये वाइट और कलरलेस है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी अच्छी है. 16th question. What is the bound water percentage in the chemical structure of set dental amalgam? डेंटल एमालगम अभी तो चला गया है मिनामाटा कन्वेंशन, लेकिन अभी ये फिर भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे. क्या होता है बाउंड वाटर परसेंटेज? Sixteen is A, correct. There should be no water. Okay. Also, delayed expansion chances may be there. 17th question. Which component of smear layer is most resistant to removal by 17% EDTA? EDTA आप यूज करते हो, लेकिन कौन सा जो कंपोनेंट है वो मोस्ट रेजिस्टेंट है? Denatured collagen, hydroxypeptide, bacterial remains, or inorganic debris? Question is 17. Sorry. 17th question. Which component of smear layer is most resistant to removal by 70% EDTA? Here the answer is
denatured collagen. Okay, that is most resistant. And to remove organic portion, you have to use our favorite sodium hypochlorite. 18th question. In internal resorption, what is the primary requisite for the clastic cells to initiate? ये जो cells resorption वाला है clast osteoclast, उसको resorption के लिए क्या primary requisite है? सही बात है, आपको प्रोटेक्टिव जो लेयर होता है प्रीडेंटिन उसको लॉस होना चाहिए, तभी जाके वो रिजॉर्प्शन में इनिशिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जी पैक और जी फोर्स इन सोनिक इरिगेशन रेफर्स टू। सोनिक इरिगेशन में जी पैक या जी फोर्स क्या होता है? करेक्ट आंसर, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ अकाउस्टिक। तो हमारे सीनियर क्या सिखा गए थे कि आपको अल्ट्रासोनिक में पता है कुछ टर्म्स आते हैं अकाउस्टिक वाले, तो ये आपको टिक कर देना है, ठीक है। ये सब थोड़ा है वेट, टॉर्क लिमिट, ये आपको थोड़ा कोरिलेट भी करना पड़ेगा। 20th question, which specific type of lucite crystal structure is found in high strength dental glass ceramics? lucite का कौन सा टाइप स्ट्रक्चर है हाई स्ट्रेंथ के लिए? 20th question, B is the answer. Correct answer, you should have tetragonal form. Okay. 21st question, transition temperature range TTR. Which TTR is characteristic of M-wire night compared to conventional nitinol? TTR कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? आंसर इज करेक्ट बाय डॉक्टर मयंक, वेरी गुड। आपने रिसेंट एडवांसेस पढ़े होंगे। इट इज शिफ्टेड अबव बॉडी टेम्परेचर टू एंश्योर द फाइल रिमेन्स इन मार्टेनसाइटिक फेज। सही है। व्हाट इज द ईएम्स टेक्निक? ये तो आपको पता ही होगा। 22nd क्वेश्चन, सबको पता होगा 1:1 मर्क्यूरी रेशियो, ईम्स टेक्निक। अब जीपीएससी में बहुत सारे टाइम ये क्वेश्चन भी पूछते थे, ईएम्स टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो 1959, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये इंक्रीमेंटल लेयर ऑफ कंपोजिट इन है क्लास 2 कैविटी, तो इसको स्नो ब्लो टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल और स्लो स्नो ब्लो टेक्निक्स। 23rd क्वेश्चन, इन नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन यानी कि एब्ट्रैक्शन थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच मैकेनिकल प्रिंसिपल?
B is the correct answer. Tensile stress concentration at the fulcrum of the tooth that justifies abstraction theory. 24th question. Which specific interleukin is considered the master pro-inflammatory cytokine in reversible to irreversible पल्पाइटिस? कौन सा इंटरल्यूकिन मास्टरमाइंड है? 4, 10, बीटा और 8। 24th question. C is the answer. That is correct answer. Beta, interleukin beta is the main culprit here. What is the C factor for an occlusal veneer onlay restoration? C factor of an occlusal veneer. Correct answer. 0.2. 1 upon 5 is the correct answer. Okay. एक बॉन्डेड होता है और 5 अनबॉन्डेड, तो 1 upon 5. Question 26. Self-limiting property of polyacrylic acid in glass ionomer cements. Self-limiting property of polyacrylic acid वो क्यों होता है? करेक्ट आंसर डॉक्टर मयंक. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. हाई मॉलिक्यूलर वेट of the acid preventing deep penetration into the tubules. Due to the high molecular weight, it cannot penetrate. 27th question. In guided endodontics, what is the primary function of the sleeve? स्लीव का क्या काम है, रोल क्या है? B is the correct answer. Sleeve helps in exact angulation and depth. Okay, आपको उसको ध्यान से एंगुलेशन और डेप्थ को एंगुलेशन में इंसर्ट करना पड़ेगा, तो वो डिक्टेट करेगा. ठीक है, सर्जिकल गाइड की तरह वो डिक्टेट करेगा. अभी इम्प्लांट प्लेस करने के लिए भी सर्जिकल गाइड आ गया है. 28th question. Which laser wavelength is most highly absorbed by hydroxyapatite, making it ideal for hard tissue cutting? ठीक है. अब हाइड्रोक्सीएपेटाइट दांत में जो होता है वो लेजर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हार्ड टिश्यू कटिंग में काम हेल्प या एनहेंस करेंगे. तो कौन सा लेजर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोक्सीएपेटाइट? करेक्ट आंसर. दिस इज द फॉर हाई और हार्ड सब्सटेंस. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, हार्ड टिश्यू कटिंग. ठीक है, फिर आपको ये नहीं भूलना है. ठीक है, CO2 कब यूज होता है ये भी आपको पक्का पता होना चाहिए. तो ऑप्शन ए और बी है वो बेटर फॉर सॉफ्ट टिश्यू है, ये वाले. तो ये हमारे जो पिगमेंट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं, हीमोग्लोबिन, मेलानिन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ए और बी सॉफ्ट टिश्यू के लिए है, सी है जो हार्ड टिश्यू के लिए है.
ठीक है। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द बैगी सॉक इफेक्ट इन एंडोडोंटिक्स? ये कुछ नया टाइप का सॉक आया है, बैगी सॉक। बी इज द आंसर correct. A poorly adapted master gattapercha cone in a large oval canal, that is the baggy stalk. Okay. Question number 30, which component of MTA is responsible for its radio opacity? तो एक भी एमसीक्यू की एग्जाम नहीं है, जीपीएससी की या पीएससी की या नीट एमडीएस की, जिसमें एमटीए का कोई क्वेश्चन ना हो। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन ना हो, वो क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसके बारे में जितनी भी आप पीएचडी करो उतनी कम है। लेकिन बी अवेयर ऑफ योर टाइम, when you're having short time you focus on more number of questions. Okay. Which component of MTA? Question number 30, answer is B, bismuth oxide. It provides radio opacity. Okay. और bismuth oxide की weakness क्या है? It causes tooth discoloration, so its alternative is zirconium oxide. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, इसके ऑल्टरनेटिव्स जिरकोनियम ऑक्साइड है। 31st, what is the monoblock effect in endodontics and which of the following describes a secondary monoblock? monoblock effect क्या है? B is the correct answer. Two interfaces existing between ciliary and dentin and the ciliary and the core. Good. डॉक्टर मयंक ने आज अच्छा आंसर दिया, तन्मय ने भी अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which specific zone of pulp dentin complex is the first to show changes in the presence of early enamel caries? कौन सा जोन चेंजेस पहले बताएगा? तन्मय ने सबसे पहले आंसर दिया। करेक्ट आंसर, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर शोज चेंजेस। ठीक है, वो उसको प्राइमरी सेंसर भी बुलाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये तो अब पूछा कि कैरिस का चेंजेस है, सीधा ही बोलेंगे प्राइमरी सेंसर, ये क्वेश्चन होगा और नीचे सब लेयर के नाम लिखे होंगे ऐसे, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होगा प्राइमरी सेंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओडोंटोब्लास्ट लेयर क्या करेंगे, ट्यूबल्स की साइज कम कर देंगे और रिएक्टरी डेंटिन इनिशिएट करेंगे फॉर्मेशन। क्वेश्चन 33, what is the modulus of resilience in the context of orthodontic wires or endodontic files? Modulus of resilience क्या है? डेंटल मटेरियल्स का ये क्वेश्चन है।
33rd question, B is the answer, that is correct. Total energy absorbed by a material before it reaches its elastic limit, that is called resilience. 34th question, which bioactive glass component is responsible for the formation of hydroxycarbonate apatite layer? 34A is the answer, but here all of the above is the answer. ठीक है? 35th question, internal bleaching, the cervical resorption risk, ठीक है, is highest when using which agent? जब आप ब्लीचिंग यूज करोगे इंटरनल वाला तो सर्वाइकल रिजॉर्प्शन कौन से एजेंट से सबसे ज्यादा है? 35th क्वेश्चन, C is the correct answer. 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि सुपर ऑक्साइड, ठीक है? 36th क्वेश्चन, what is the damping capacity of a dental material? सबसे पहले आंसर है डॉक्टर मयंक पलिक का, वेरी गुड. ए इज द करेक्ट आंसर. डैम्पिंग क्या होता है? द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी, उसको बोलेंगे हम डैम्पिंग कैपेसिटी, ठीक है? और रेजिन मैट्रिक सिरामिक्स होते हैं, उसका हाई डैम्पिंग होता है, वो ऑक्लूजल फोर्सेस को सॉकअप कर देंगे, कम कर देंगे, नीचे वाले जो टूथ होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसको बचाएंगे. 37th question, which specific collagen type is most abundant in mineralized dentin matrix? 37th question, here the answer is A. 90% of organic matrix of dentin is type 1 collagen. 38, what does toughening by crack deflection mean in zirconia restorations? Toughening by crack deflection. 38th question, answer is B. क्रैक जो होगा वो चेंज करेगा डायरेक्शन और एनर्जी लूज करेगा, ठीक है? उससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है? 39th क्वेश्चन, इन एपेक्सिफिकेशन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
What is the primary histological nature of the apical barrier comb? एमटीए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 2-3 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चंस आ गए। एपेक्सिफिकेशन में हिस्टोलॉजिकल नेचर क्या होता है एपिकल बैरियर का? B is the correct answer. Osteocementum or bone-like tissue will be formed when you go for apexification with calcium hydroxide. Okay, and it is morphologically similar to cementum or bone. 40th question. Which photosensitizer is used in antimicrobial photodynamic therapy for root canal disinfection? कौन सा फोटोसेंसिटाइजर यूज हम करेंगे? Fastest answer by Krima. Here the answer is correct. Methylene blue is the answer. Methylene blue or toluene blue is introduced in the canal. ठीक है? It produces reactive oxygen species that destroy bacterial cell walls. Okay, methylene blue या toluene blue. 41st question. Which specific phenomenon in CBCT imaging occurs when a high-density object like metal post causes a streak or dark band that mimics a vertical root fracture? ठीक है, कौन सा फेनोमेनन सीबीसीटी में ऐसा है कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर जैसा दिखेगा? Here the answer is beam hardening. Due to that, it is the appearance of vertical root fracture where you have placed metal post. ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप सॉल्यूशन थोड़ा देख लेना। 42nd क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनको ही ये पीडीएफ मिलेगी। अभी कोर्स की ऑफर चालू है, 999 में ही मिल रहा है। In hydrodynamic theory of dentin hypersensitivity, what is the calculated velocity of dentinal fluid movement required to stimulate alpha A delta fibers? अब थोड़ी एडवाइस है, ऐसे क्वेश्चंस में ये लिखना है, आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। 40 सेकेंड में क्या है वेलोसिटी ऑफ डेंटाइनल फ्लूइड मूवमेंट? अब ये थोड़ी हम याद रखेंगे इतना 40 सेकेंड क्वेश्चन में। तुक्केबाजी में अगर आपको पीएचडी करना है तो आप कर सकते हो। तुक्का भी सही हो जाए तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। 40 सेकेंड में क्या आंसर आएगा? डॉक्टर क्रीमा ने थोड़ा आंसर देने की कोशिश की, गलत हुआ। तुक्केबाजी 2 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जाने दो, थोड़ा स्पेलिंग वो एरर हो गया है प्रिंटिंग में। 44th क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रिटिकल हीट थ्रेशोल्ड फॉर पीडीएल ड्यूरिंग द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक टिप्स और वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन? क्रिटिकल हीट थ्रेशोल्ड क्या है? 5, 10, 15 और 20। 44th, कोई ई आंसर बता ही नहीं रहा है। ई तो लिखिए तब जाके आपका मार्किंग्स करेक्टली पता चलेगा। अभी अगले लेक्चर से एक इम्पोर्टेंट एडवाइस है, आप क्या करोगे, आपको ओएमआर शीट परचेस करना है, उसमें आपको सर्कल करना है
क्या बोलते हैं, सर्कल ही करते हैं ना, या ब्लैक ब्लैक करना है? गुजरातीમાં કહીએ કોટવું, फिल द सर्कल, ठीक है। अब इतने मल्टी टैलेंटेड हो गए थे, तो वो आपको ट्राई करना है अगली बार, तो वो भी एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। 44th का आंसर क्या आएगा? कोई नहीं बता रहा है, कुछ डिले हो रहा है ऐसा लग रहा है। Here the answer is B, 10 degree Celsius. Okay. 45th question. Which property of calcium silicate based sealers is considered a disadvantage in the event of a required retreatment? कौन सी प्रॉपर्टी एक डिसएडवांटेज है, रीट्रीटमेंट करना चाहोगे तब? करेक्ट आंसर, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो इंसोल्यूबल है, ठीक है, इसलिए हम रीट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि रीट्रीटमेंट के टाइम क्लोरोफॉर्म हम यूज करेंगे गट्टा पर्चा को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए। 46th क्वेश्चन, द पिंक स्पॉट ऑफ ममरी इज ए क्लिनिकल पैथोग्नोस्टिक साइन ऑफ, ये तो सबको पता होगा, ममरी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन है 46। इंटरनल रिजॉर्प्शन का दूसरा नाम है, ये कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं, आपको तो पता ही होगा। 47th क्वेश्चन, इन फ्रैक्टोग्राफी, ये कुछ नया आया है, व्हाट डज ए हेगल्स पैटर्न ऑन ए फ्रैक्चर्ड सिरेमिक सरफेस इंडिकेट? 47th क्वेश्चन। 'बी' इज द करेक्ट आंसर। फ्रैक्टोग्राफी में जो हेगल्स पैटर्न होती है वो क्रैक प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आपको दिखाएगी, ठीक है। 48th क्वेश्चन, एल पॉइंट क्या है डेंटल गोल्ड गोल्ड कास्टिंग एलॉयज के बारे में? एल पॉइंट। फोर्टी एट में क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर इज बी, द टेम्परेचर एट विच एलॉय इज कंप्लीटली मोल्टन, ठीक है, वो आंसर है एल पॉइंट का, यानी कि कंप्लीट लिक्विड हो जाना चाहिए। 49th क्वेश्चन, which specific protein in dentin matrix acts as a sequestrum site for growth factors, preventing their degradation until they are released by acid etching? कौन सा प्रोटीन एक सिक्वेस्ट्रेशन साइट की तरह एक्ट करेगा ग्रोथ फैक्टर्स की तरह? सी इज द आंसर, डिकोरिन इज द आंसर, ओके। वो क्या करेगा, ग्रोथ फैक्टर्स को सिग्नल देने के लिए अलाउ करेगा रिपेयर के लिए। आज बहुत सारे गलत होंगे लोग के क्वेश्चन आंसर्स। Question number 50. What is the Dufour effect, which is sometimes discussed in the context of high-speed instrumentation and pulp heat? Dufour effect क्या है? What is the Dufour effect?
Correct answer by Krima and Tanmay. A is the answer. Heat flow caused by a concentration gradient. 51st pseudoplastic behavior क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी वो समझाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड की? Fastest answer by Dr. Mayank. B is the correct answer. Its viscosity decreases as the shear rate increases. और प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन pseudoplastic flow. 52nd question. Which S point in the polymerization of resin refers to the moment when the material can no longer flow to accommodate shrinkage stress? S point की ये डेफिनेशन है. मोमेंट के बारे में बताना है जब मटेरियल फ्लो नहीं होगा. आंसर इज डी, दैट इज द जेल पॉइंट. जेल पॉइंट में वो फ्लो करना बंद कर देगा. ठीक है. 53rd क्वेश्चन. व्हाट इज द डुलोइंग पेटिट लॉ रिलेवेंस इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल एलॉयज? कुछ नए नए लॉस, कुछ नई नई थीरीज आ गई आपके सामने. 53rd क्वेश्चन. डुलोंग पेटिट रिलेवेंस. इसका आंसर आएगा 53rd में. ए इज द करेक्ट आंसर. वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एलो एट हाई टेम्परेचर्स कैलकुलेट करेगा. 54th क्वेश्चन. Which specific bacteria are considered pioneers in the colonization of a clean root canal following trauma? 54th क्वेश्चन. यहाँ तो आंसर दिया हुआ है. फैकल्टेटिव एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, इसको जाने दो. 55th क्वेश्चन. In hard tissue microcity analysis, what does the SMI structure about? वो SMI इंडेक्स रूट कैनाल के बारे में इंडिकेट करेगा. हार्ड टिश्यू माइक्रोसिटी एनालिसिस में SMI स्ट्रक्चर रूट कैनाल के बारे में क्या इंडिकेट करेगा? 55th क्वेश्चन. करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. प्लेट लाइक और रोड लाइक होगा, ये इंडिकेट करेगा. और SMI का इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं. SMI 0 में होगा तो रिबन होगा कैनाल, 3 होगा तो रोड लाइक होगी. ठीक है, ये आपको पक्का याद होना चाहिए. 56 फोटोसेंसिटाइजर PAD फोटो एक्टिवेटेड डिसइंफेक्शन सिस्टम में कौन सा यूज होता है? 56th क्वेश्चन.
ए इज द आंसर करेक्ट। तो आपको ये याद रखना है, फोटो सेंसिटाइजर जब भी आए तो ब्लू वाला लिख देना है, मिथिलीन या टोल्यूडिन आपको लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज a Ziegler Natta catalyst relevance in dental materials? 57th question। Ziegler Natta क्या है? Here the answer is B. Synthesis of a high density polyethylene for orthodontic brackets। Orthodontic brackets में हमको थोड़ा हाई डेंसिटी चाहिए पॉलीथीन, तो जिगलर नेटा का यूज हम करेंगे, ठीक है, कैटलिस्ट। 58 in internal resorption of ship's lacuna are created by which cell? हाउ शिप lacuna कौन से सेल बनाते हैं? 58th क्वेश्चन। बी इज द आंसर। एज यू नो रिजॉर्प्शन में क्लास टी आएगा, ठीक है, तो ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द हर्जियन स्ट्रेस यूज्ड टू इवेल्युएट? ये हर्जियन स्ट्रेस टेस्ट क्या इवेल्युएट करेगा? 59th क्वेश्चन। B is the correct answer. Fatigue and contact damage of the ceramic crowns. 60th question. Which specific component in self-etch adhesives is responsible for chemical bond to hydroxyapatite? Self-etch में कौन सा कंपोनेंट है जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट के साथ बाइंड करेगा केमिकली? C is the answer, but here 10 MDP is the answer, ठीक है, that is the component for chemical bonding, okay, उसको नैनो लेयरिंग इफेक्ट भी हम बोलेंगे। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग इन वाई टीजी पैड जिरकोनिया? हमने कल ही ये किया था या 2 दिन पहले। ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग क्या होता है? Here the answer is tetragonal to monoclinic phase. That is the transformation toughening. Question number 62. Variable modulus value कौन सी है? ये मैंने बताया ना, जैसे ये ई आपको इंडिकेट करना है। इंडिकेट से मोर प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल डेंटल सिरामिक। आपको पता ही नहीं कि मॉड्यूलस क्या है, तो आप ई भी लिख सकते हो, और आपको पता है तो आंसर दे सकते हो। 62 में क्या आंसर आएगा? Here the answer is B. A high value indicates predictable and reliable dental ceramic. What is the Jagger-like effect in laser endodontics? Jagger.
जेगर लाइक इफेक्ट क्या है? 63rd क्वेश्चन, बी इज द आंसर। करेक्ट आंसर, फाइबर ऑप्टिक टिप जो है वो स्ट्रिप हो जाएगी और लेटरल एमिशन उससे बढ़ेगा। 64th क्वेश्चन, विच एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय क्लोरेक्सिलिन टू प्रिवेंट हाइब्रिड लेयर डिग्रेडेशन? स्क्रीन को छोटी करनी पड़ेगी अब, वेट। Which enzyme is blocked by chlorhexidine to prevent hybrid layer? Sixty-fourth question. Answer is C. Both MMPs and cysteine cathepsins are blocked. ठीक है? The Stefan equation in dentistry. एक तो कव आता है और एक स्टेफन इक्वेशन कुछ आया, तो वो क्या होता है? स्टेफन इक्वेशन इन डेंटिस्ट्री क्या होता है? Adhesive force of a denture or thin liquid film. Good answer. Oswald Riepling in the context of GSC or dental ceramics क्या है? 66th क्वेश्चन, आज हमारे स्टाफ ने अच्छे पेपर बनाए, मुझे भी पहली बार सुनने को मिला है। ओस्वाल्ड राइपनिंग क्या है? 66 आंसर, A is the correct answer. Growth of larger crystals at the expense of smaller ones. 67th question, which specific heat treatment creates the blue color in night eye files? कौन सी स्पेसिफिक हीट ट्रीटमेंट ब्लू कलर करेगी नाइट आई फाइल्स में? Here the answer is growth of a thick titanium oxide layer via specific thermal cycling. तो ब्लू कलर में कौन सा कंपोनेंट होता है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड का मेन पार्ट होगा। ठीक है, और वो कौन सा ब्लू है? वॉटेक्स ब्लू। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम टाइटेनियम ऑक्साइड लेयर। 68th question, what is the smear plug length on an average? Smear plug length on an average. 68th क्वेश्चन, अब ये बार बार बता रहा हूँ, ऐसे डिजिट्स वाले क्वेश्चन को आपको ई क्लिक करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब आपकी ओएमआर शीट आएगी तो ये पढ़ो ही मत, वो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने ई सर्कल कर दिया फिर आप वो इरेज नहीं कर पाओगे, वो आपको ध्यान रखना है। Here the answer is 10 to 40 micrometers. 69th question, which phase of the setting reaction in zinc phosphate cement is responsible for its strength? कौन सा रिएक्शन वो सेटिंग रिएक्शन का फेज है, वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Here the answer is B. Crystalline phase या crystalline opaque phase is mainly responsible for its strength. In external cervical resorption, the Heather class 4
क्या होता है? एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन। 70th क्वेश्चन। C is the correct answer. It is a lesion extending beyond the coronal third of the root. 71st क्वेश्चन, व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी इन डेंटल मटेरियल्स? ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं, आपको तो पता ही होगा। टूट बन जाएगा जब शेकन और स्टीडम करेंगे, ठीक है। 72nd क्वेश्चन, विच ग्रोथ फैक्टर इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व इन रिएक्शनरी डेंटिनोजेनेसिस? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, तो ध्यान रखकर टिक करना है। आपको ये लगेगा कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो ये टिक कर दो, तो सोच समझ कर ही टिक करना है। रिएक्शनरी डेंटिनोजेनेसिस में कौन सा ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे हैं। 73rd, वॉन मिसेस स्ट्रेस एनालिसिस, ये कुछ नई एनालिसिस है, वो क्या है? ये मटेरियल के बारे में, हमारा स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस एनालिसिस वॉन माइसेस क्या है, क्या प्रिडिक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 73rd। करेक्ट आंसर, कब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा, वो ये वॉन माइसेस स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, what is the n elasticity of a night eye file? What is the n elasticity? कुछ नई टाइप की n elasticity आई। 74th क्वेश्चन। करेक्ट आंसर, it is a time dependent recovery. 75th question, which specific free radical is the primary initiator in the light cured resins? तो आपको तो ये पता ही होगा, हमने सेकेंड ईयर डेंटल मटेरियल्स में भी ये पढ़ा था। 75th क्वेश्चन, द आंसर इज सी, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी इनिशिएटर इन लाइट क्योर्ड रेजिन्स, कार्बन सेंटर्ड वाला रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटिन साइलोप्रोटीन इज ए मार्कर फॉर? डेंटिन साइलोप्रोटीन इज ए मार्कर फॉर। 76th क्वेश्चन, B is the correct answer. Odontoblast, DSP, is the marker. The Grubbs test in dental research, वो कौन से काम के लिए यूज होता है? 77th क्वेश्चन। गुड आंसर, इट डिटेक्ट्स आउटलायर्स इन ए डेटा टेस्ट, झूठ बोलने वाले को ग्रब करेगा, पकड़ेगा, ठीक है। इट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल टू आइडेंटिफाई रिमूव डेटा पॉइंट्स दैट आर statistically improbable. What is the Pascal's law relevance in endodontics? 78.
ये जीपीएससी में आता था, हमारे टाइम शायद आया था क्वेश्चन। 78th क्वेश्चन। सही बात है, लंबा ऑप्शन होता है वो आपको ठीक करना है, ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक इंप्रेशन मटेरियल हैज द हाईएस्ट टीयर स्ट्रेंथ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और कुछ लोग तो इसमें कंट्रोवर्सी भी खड़ी करेंगे। 79th क्वेश्चन। ये पीडीएफ में 200 क्वेश्चन है, हम आज 100 ही सॉल्व करेंगे। 100 आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, फिर आपको मुझे व्हाट्सएप करके मार्क बताना है। जिन लोगों ने पेड करके कोर्स लिया है उनको ही ये पीडीएफ मिलेगी। माफी चाहते हैं क्योंकि हम फ्री में बहुत सारी चीजें नहीं दे सकते हैं। निर्मला सीतारामन ने जो बजट दिया है वो फ्रेंडली नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। 79th क्वेश्चन। ए इज द आंसर, सी इज द आंसर, पॉलीसल्फाइड। ठीक है, मैंने बोला था ना कंट्रोवर्सी थोड़ी रहेगी। 80th क्वेश्चन। माइक्रो लीकेज इज मेजर्ड इन विच यूनिट्स टिपिकली? इसका आंसर है माइक्रोमीटर्स। ठीक है। 81st क्वेश्चन। व्हाट इज द बॉशिंगर इफेक्ट इन एंडोडोंटिक फाइल्स? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार जीपीएससी की प्रीलिम ओएमआर शीट पढ़ देंगे, तो मैं पक्का बोल देता हूँ कि उनके जो 3 आवर्स में 200 क्वेश्चंस पूरे करने हैं वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बोलेंगे कि मुझे ये बाकी रह गया, ये हो गया। इसीलिए वी रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्स। आज जो मैं 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा आपको, उससे आपको टैकल करना है टाइम, आपका लॉजिक, थॉट प्रोसेस, वो सब। 81st का आंसर आएगा ए। इट इज द रिडक्शन इन द यील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज रिवर्स्ड। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ कम होना, बॉशिंगर इफेक्ट। Which S layer is associated with certain endodontic pathogens like Tenerilia forsythia? T forsythia में कौन सा S layer इन्वॉल्व होता है? सरफेस प्रोटीन, सेक्रेटरी, स्लाइम और स्मीयर लेयर। 80 सेकेंड में क्या आंसर आएगा? A is the correct answer. Surface protein layer is the answer. ये डीएम का क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे। प्रोपोर्शन लिमिट क्या है आपको तो पता ही है। द पॉइंट वेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नो लॉन्गर लीनियर। ठीक है, यहाँ तक हुक्स का लॉ अप्लाई करेगा, बाद में परमानेंट डिफॉर्मेशन जोन आएगा प्रोपोर्शन लिमिट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक चिलेटिंग एजेंट इज ऑल्सो ए पोटेंट एंटी फंगल? कौन सा एजेंट है वो एंटी फंगल भी है? 84। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, तब तक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अब ये लोग आपको ये नहीं पूछेंगे कि एंटी फंगल की तरह एक्ट करता है, आपको ये पूछेंगे कि पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस की हिस्ट्री थी, फिर आपके पास रूट कैनाल के लिए आया, तो आप इसमें कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करोगे? ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर आएगा साइट्रिक एसिड इज द एजेंट विच इज एंटी फंगल। ठीक है। 85th क्वेश्चन। व्हाट इज क्रीप इन डेंटल एमलगम? आपको ये पता ही होगा, ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी पता होगा। 86th क्वेश्चन। इन इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अफेक्टेड डेंटिन? ठीक है, 86 में क्या आंसर आएगा? अफेक्टेड डेंटिन में क्या रोल है? ठीक है, बचाने का। उसको बचाने का ये रोल है कि वो रिमिनरलाइज हो सकता है, वो डिमिनरलाइज नहीं हुआ इसलिए।
87th क्वेश्चन, ड्यूअल क्यूर में फोटो इनिशिएटर सिस्टम क्या है? ड्यूअल क्यूर सिस्टम में फोटो इनिशिएटर सिस्टम क्या है? B is the answer. Here, C is the answer. Both camphorocquinolide and benzoyl peroxide or amine. ठीक है. 88th question. What is the E modulus of human dentin on an average? आपको E लिखना है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये आपको पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन रट लेना है. ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको पक्का पता हो तभी जाके अटेम्प्ट करना है, वरना ये अभी पहले राउंड में लीव करना है. ई पर सर्कल नहीं करना है. ई पर सर्कल दूसरे या तीसरे राउंड में ही करना होता है. 89th क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो, ये भी आपको पता होगा. द रेशियो ऑफ टी टू ए ट्रांसवर्स टू एक्सियल स्ट्रेन को हम पॉइजन रेशियो बोलेंगे. 90th क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक वेवलेंथ इज यूज्ड बाय डायग्नोडेंट टू डिटेक्ट कैरीज. इसमें भी आपको ई आंसर लिखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, आपको जब तक पता नहीं वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है फर्स्ट राउंड में. ठीक है. 90th क्वेश्चन में आपको अगर देखना हो तो अभी आंसर बता के देखिए, फिर हम आंसर बताएंगे आपको. 90 में क्या आंसर आएगा? Here the answer is B, 655, and red wavelength is important. फ्लोरोसेंस के लिए 655 और रेड वाला यूज होगा. What is the biofilm maturational drift? 91st क्वेश्चन. तन्मय ने सही आंसर दिया, तुक्का लगाया. ऋतु ने भी सही आंसर दिया. 91st में क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर एरोबिक टू एनारोबिक होना. 92nd question. In endodontic microsurgery, the isthmus is most commonly found in which root? 92nd question. एंडोडोंटिक माइक्रोसर्जरी में isthmus कहाँ पे देखने को मिलेगा? B is the correct answer. 93 गैल्वेनिज्म क्या है वो भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट जब होगा तब. 94th question. Which specific collagen cross linker is used to improve bond longevity? बॉन्ड लॉन्जेविटी को इंप्रूव करने के लिए कौन सा कोलेजन का क्रॉस लिंकर यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर इज 94. Here the correct answer is all of the above. All are the cross linkers. Torsional fatigue in a file is caused by. Torsional fatigue कब आएगी? $95th question. B is the answer. Correct. Tip gets locked. ठीक है. That is the torsional fatigue.
सीधा जंप मार दिया है 100 क्वेश्चन पर। कोई बात नहीं, थोड़े क्वेश्चन चले गए। आज का लास्ट क्वेश्चन गिन लो, वो 4 क्वेश्चन चले गए। व्हाट इज द हाइड्रोस्कोपिक एक्सपांशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मटेरियल? ये भी आपको आंसर पता ही होगा, दैट इज बी। जब आप इमर्स करोगे वाटर में तब ये हाइग्रोस्कोपिक एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। बाकी के एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े टफ थे। आपके जो भी मार्क्स है मुझे व्हाट्सअप करना है, पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप में ही मिल जाएगी। आज के लेक्चर में जिन्होंने भी अपना टाइम दिया उनको धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। हम जल्द ही 10 तारीख के बाद मॉक वाले एग्जाम्स लेने वाले ऑनलाइन ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे और मॉक एग्जाम्स भी अपडेट होगी एप्लीकेशन में। तो जो लोग ने जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 999 फीस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक और शेयर करना भूलना मत। हैव ए नाइस टाइम और बाय बाय।